21. So in equivalent spherical glass lens u equal to 3 f to a focal length 30 centimeters is placed on the axis with optical center at x equal to 40 centimeter. Okay. And its principal axis coinciding with axis. Wait, focal length 30 centimeter. Okay, spherical. Right. Okay. Samjha. A light ray given by the equation. Okay, incident on the lens towards the positive x-axis. So ये एक light ray है. Fine. Find the equation of the refracted ray. If the space of the right side of the lens is filled with liquid of refractive index 4.3, find the new equation of the refracted ray. Okay, if the space on the right side of the lens is filled with liquid of refractive index 4.3. Wait, सिर्फ लेंस का right? Okay, नहीं, throughout x bigger than 40 centimeter. Oh, okay, that is filled with liquid of refractive 4.3. Find the equation of, okay, find the new equation of the refracted ray. Right, so ठीक है ना, first part तो easy है. So find the equation of the refracted ray. मतलब इसमें क्या है, just इसका y0 कब होता है, whenever x equal to just what, x equal to क्या कर रहा था सच में, x equal to -1, right? First of all, इसको लिखो with respect to optic center. So optic center is what, x equal to 40 पे, right? So I'm gonna define u is equal to x minus 40. So just x equal to 40 plus 3 everywhere. तो ये जो line है इसका क्या हो जाएगा, 39y is equal to negative x, which is just, you know, u is just, sorry, x is just u plus 40. So negative u, negative 40, right? So uv space पे अपन v की जगह just, you know, u y space whatever, then plus 1, right? So x y and same जो भी है. So what do you have, ये negative 39 just like उसको उधर भेजो 39, और ये ऊपर shifted वगैरह नहीं है ना. Okay, good. Just 39 negative 39 y plus 1 equal to negative u, or like this thing, right? So जब भी y0 होगा then u just becomes what, it just becomes negative 39. So तुम्हारा u negative 39 है. Almost match हो गया वो चीज़. Okay, whatever. We want to figure out v क्या रहेगा, right? या फिर ये अगर u नॉट है तो u1 क्या रहेगा, which is our image, right? Okay. और at u equal to 0 तुम्हारा y कितना है, तुम्हारा y is just -1. So y not equal to -1, right? वहां पे जाएगा. Anyway, so अपने जो एक पॉइंट तो रहेगा ही हमेशा in any case, which is 0, -1, और दूसरा जो पॉइंट रहेगा which we'll figure out. So 1 upon v minus 1 upon u. Oh shit, yeah, okay, that's actually correct. So plus 1 upon 39. Is that correct or not? 1 upon u, I believe this is correct, is equal to 1 upon f, which is focal length 30 centimeter. Okay, cool. So yeah, 1 upon v is equal to 1 upon 3 common is just 1 upon 10 minus 1 upon 13, I believe, which is like 1 upon 3, फिर नीचे 130 आ जाएगा. ये 3 है by the way. ऊपर क्या आएगा, just 3 तो मर गया just 130. So v equal to 130. Okay, interesting. So ठीक है ना, so जो image रहेगी is like 130 to the right of this guy. Find the equation of the refracted ray. Oh, of course. And also तुम्हारा जो point आएगा is like 130, 0, right? It's passing through this guy. So yeah, like determinant x, y, 1, और ये क्या चीज़ है अपनी 130. This is for some reason 0, 1, और ये क्या अपना 0, -1, 1. Discriminant is equal to 0. चलो फिर x के लिए क्या है. This is very weird. I'm not expecting ऐसा कुछ होने वाला था. अच्छा, ये 130 अपन कुछ कर नहीं सकते क्या, अभी नहीं कुछ नहीं कर सकते इसका. चलो कैलकुलेट करो. x टाइम्स just 1 minus like, that's 0. Okay, 0, फिर -1 is like +1. Okay, फिर बाद में negative y and you just have negative 130 whatever. Okay, that's the thing, right? और यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे एक्चुअली u चाहिए, but then whatever. So जो भी इसका u y स्पेस रहेगी like, yeah. अच्छा, u को तुम x माइनस, क्या पे मर गया, वो x माइनस 40 कर सकते हो ना, डायरेक्टली वही कर डालो. यहाँ पे जस्ट x माइनस 40 डाल दो, cause why not? This works, right? So एक काम करते हैं, like just do 40 times of this over there or something interesting. और कुछ और कर सकते हैं इसमें. 1 अपन subtract, like subtract that like this, जो भी है. This is still weird. Just calculate it. Who cares? X minus 40 times, yeah, +1, right? And then फिर negative y, -130, so just plus 130y. And then ये 1 के लिए क्या, just
negative 130. Okay, negative 130, and this is equal to 0, I believe. Awesome. Yeah, I guess this works. इसका मतलब क्या हुआ that x plus 130y is equal to 170. That's our new equation of, yeah, so just x plus 130y equal to 170. Okay, अब next चीज रहेगी when this is right. ये जो चीज रहेगी, this is तूने change कर दिया इसका refractness, right? It's like 3 upon 2 now. That's kind of not so good. Oof. So you will have to do that. हाँ. At least ये एक भी convex है, so that's nice. मतलब कि तुम्हारा जो f है initially just 1 upon f, it's just equal to what, mu minus 1, जो कि refractiveness है इस class का, जो भी है, like 3 upon 1. Right, okay. We'll just have to figure it out. Just 1 upon 2, and यहाँ पे 2 upon क्या आएगा, 2 upon r or something, जो कि curvature है. Both terms will be positive for some reason. So just हमारा जो radius of curvature है, that's actually equal to the focal length. So the radius ही in fact 40 centimeter है, right? So ठीक है ना, just gonna use that, जो भी है. So at least you got first का answer. अब चलो, once again same stuff. U अपने को समझ गया है क्या है. U is just negative 39 whatever, which is just x minus 40, जो भी है, you get the thing. और अब अपने को, yeah, you want a new thing. So mu2 क्या रहेगा, just going in that direction, so positive, and क्या है basically 4/3. Okay, 4/3 upon v minus यहाँ पे क्या index, just 1, so 1 upon, right, because it's just as seen in air, of course, from optic center से तुम देख रहे हो. So 1 upon अपना u, of course, which is okay, plus 1/39 आ जाएगा. This is equal to mu2. अच्छा, पहला surface is just positive r, and then mu is just 3/2, like 1/2 upon r, which happens to be the same as 40 centimeter. Okay, फिर plus 4/3 minus 3/2, which is कितना, ये 6 आ रहा है ऊपर, क्या है, 8 minus 9 is negative 1/6 upon negative 40, I guess, like that's the same thing as 1/6 upon 40. Awesome. So 1/2 plus 1/6 is like just 1/3, I believe, right? Yeah, of course. So just 1 upon, yeah, like just 1 upon 120, I guess. Okay, that's what this is. So 4/3v is equal to 1 upon 120 minus 1 upon 39. So 3 से divide करो, it's like 4 upon v is equal to 1 upon 40 minus 1 upon 13. Okay, very weird. Anyway, तो कुछ समझ गया, which is like what, oh shit, और also अच्छा वो तो इमेज जीरो हो जाएगी ना, we don't, point object था, so it works out. Yeah, okay, क्या हो जाएगा जैसे 30 minus 40, god, सीरियसली ये सब करवाने को लगा रहे. 7 यहाँ पे just 3 is like 27, so it's negative 27. ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? Yeah, make some kind of mistake. I mean, u is just negative 39, that's what I'm getting at, right? इसमें भी तो max equal to 40 put करते हो, just get negative 40 plus 1 is like x equal to, इसमें x equal to negative 1 पे, that's like इसके respect में is just 39, right? Negative 39, of course. This works out, जो भी है. So you got this thing. Okay, good. Not going good. Okay, so negative 27 upon. Are you serious? अपन ये क्यों कर रहे हैं? I don't know. 40 times 30, 13. Okay. तो अपना जो v है, that value is just, it's not looking good. 160 times 13 upon negative. Okay, negative में आएगा सब कुछ. Okay, so जो दूसरा अपना point रहेगा, that is this thing. इसमें यहाँ पे 0 आएगा, just negative 160 times 13 upon 27. So अपने के पास में कितने, ये point और ये point आ चुका, right? Which is okay, cool. So our slope is what? Slope is just shit. तो normally करना पड़ेगा ना इसको. Okay. It's just gonna take forever. Like, okay. तुम्हारा जो भी आएगा, right? X से अभी तुम्हें u, okay, u which is like x minus 40, I believe. So x minus 40, जहाँ से भी ये पास हो रहा है, like that line. Equation of the refracted ray, right? Yeah, exactly. Yeah, that looks right. So x minus 40, यहाँ पे y आ जाएगा 1. What is this? उसको okay, negative 160 times 13, then y 0 है, and then 27, right? Yeah.
और क्या अपने पास में, we also have the other guy just 0 comma negative 1, 0 comma negative 1 and then 1, right? Exactly. Okay, now think about it. कुछ इसमें अपन कर सकते हैं क्या? First of all, we get negative of that 40 stuff, so add कर दो 40 यहाँ पे. Doesn't look good actually, unfortunately. Mhm. Something else. बस 27 वगैरह यूज करूँ तो it's not a forever, right? ठीक है ना? Who cares? x1 is 40. फिर तुमने वो किया just that's a 0 over there, right? That determinant is just okay, not going good. भाई करना ही पड़ेगा. There's no other way. So ये क्या just positive 160 times 13 हो जाएगा. Shit. और क्या है just for negative y just have ये तो 0 हो गया, वो मर गया. Okay, this thing. So negative into positive is like 160 times 13 times y basically. और फिर ये 1 के लिए क्या होगा? ये 1 के लिए बस पॉजिटिव 1, ये पॉजिटिव हो गया somehow just plus 160 times 13. oh somehow ये चीज मैटर नहीं करती और ये कैंसिल हो जाती है अपने आप. That was unexpected, definitely unexpected. हाँ, ऐसा क्यों हुआ? Wait, okay, I see. यहाँ पे अगर मैं y plus 1 कर दूँ then it's like just right, just y plus 1 times. Wait, वो तो 0 हो गया ना? That is 0. अच्छा, यहाँ पे 27 आएगा. Of course you can't just do that. Right, that's just, yeah, you can't just do that. Instead वो यहाँ पे 1 आएगा. Got it. So plus 1 करूँगा, यहाँ पे 27 आ गया. जो भी है somehow this like cancels out. Why did that happen? I don't know. Somehow get rid of this guy. मुझे नहीं पता कैसे हुआ बट ये हो गया. Did I do this correctly? I didn't because अच्छा नहीं, it is correct because ये क्रॉस भी 0 हो गया and then somehow ये वाला क्रॉस भी 0 हो गया. उसका एक टर्म अपना 0 ही हो रहा है हमेशा. अच्छा शिट, ये ऐसा नहीं होगा. x1 is 40 और ये अल्टरनेट राइट. जो लगी था अपना उसको गलत गलत होगा. इट्स नेगेटिव 27 ओवर देयर. गॉट इट. राइट, ओके, पॉजिटिव एक्चुअली बिकॉज ये नेगेटिव था. सो इसके लिए ये, फिर नेगेटिव y के लिए जस्ट ये वाला डिटरमिनेंट राइट which negative, okay, that's the thing. Okay, और फिर इसके लिए क्या, इस ये डिटरमिनेंट which is just this thing. Awesome. So that's the line. काफी गंदी वाली लाइन है पर जो भी है. 27x प्लस ये करना ही पड़ेगा ना. 116 times 13 is 48. 0 16 is just 208. So 208 y plus 208 then plus 27 minus this guy, right? Okay, minus 14 minus 27 is like 8 28. So it's 108 and then 0. Weird. Shit, 2080 चाहिए. मैं क्या कर रहा हूँ आज? Okay, so what is this? It's just 27x plus 2080y. Then यहाँ पे 2080 minus 1080. It's just like just 1000 equal to 0. Right, that's our equation. So इसका आंसर B है. 27x plus क्या था? 2080. Okay, then plus 1000 is equal to 0. Somehow, I don't know ये कैसे हुआ. Like that's what it is. I'm thinking कि नेगेटिव होना चाहिए था यहाँ पे. Was this supposed to be negative or what? जो लास्ट वाला यार, that was positive. So ठीक है ना, whatever. और इस वाले में क्या हुआ था जो दूसरा वाला था? पता नहीं, उसका अपन ने ऐसे क्वेश्चन किया. जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. ओके, शायद से ये वाला अपना गलत हुआ बिकॉज वॉट एवर. 22 करो एक बार से जब चेक कर लेना चाहिए ना. या आई थिंक व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे जस्ट नेगेटिव 130 प्लस, राइट, सो प्लस 40 चाहिए होगा यहाँ पे इनफैक्ट बिकॉज y plus 1 था ना. सो या ओके, दैट मस्ट हैव बीन द मिस्टेक. राइट, तो वो राइट इट्स लाइक minus 40 just ऑफ कोर्स that could be a thing. Wait,
अपना y कोऑर्डिनेट क्या है, जस्ट जब ये 0 जस्ट 1/39, राइट? whenever not 0, it's like it should be y equal to -1 when x equal to 0, right? Yeah, well, that's not happening. That's not happening. Oh, and if x, right, if x 40 here, then it's like, okay, it works out. So this actually does work out. Next question, 22. 22 is photoelectric threshold wavelength of metallic silver is this thing. Ultraviolet light of this thing is on silver surface. Calculate photoelectric threshold wavelength of metallic surface is lambda. ठीक है ना? So it's like lambda threshold. The value of work function in joules and electron volts. Ultraviolet light of this thing is instead of photon. ठीक है ना? So that's the first easiest thing. Work function and in electron volts. अच्छा, दोनों में joules में क्या कैसा काम करवा रहे हैं हमसे ये? So ठीक है, hc upon lambda. That's the thing. So hc, okay, पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे कितने नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर्स, राइट? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस थिंग व्हिच इज आई डोंट नो ये कितना होता है. करो रिड्यूस, 4 से होता है क्या? नहीं, पहले 2 से करो. एक काम है, सो 1240 ले लो अभी के लिए, राइट? एंड नाउ रिड्यूस इट. सो just 31 upon, okay, ये 4 से नहीं होता for some reason, so just 2 से 62 upon 19. Yeah, whatever, just leave it like that. 124 upon 38 electron volts, just leave it. और क्या है? Also you want in joules, so electron volt को convert कर दो joules में. Just 124 upon 38 times एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? just 16 times 10 power -20 joules, right? Approximately this much. I guess this is like close to 40 or something. I should probably just make this 40, right? I think I should. मैं never actually decrease this thing, but चलो जो भी है ना, क्या फर्क पड़ता है? Okay, that's a rash decision. Don't do that. So approximately this much, right? This is gonna take forever. So 62 times 16 upon 19 बोल रहा है, that's of 10 power -20 or something like that. 62, 16, 2, 1 carried on, 36 like 37062. So 299,992 upon 19 times 10 power -20. Yeah, whatever. So इन दोनों का approximate कर डालते हैं. So 124 upon 38, which is like 62 upon 19, right? Okay. 5, no, 3 and you got 27, 57, right? I guess it's 57. Just 5 over there. वो तो मर गया, just point. Yeah, point. Okay. So 50, अब क्या चाहिए? 38 2 minus 38 approximately, आगे जो भी है 38 फिर 2 and then it's like 1 2 फिर 120, which is close to what? I guess 6, because the 6 and 54 is just 114, so हाँ है close उसके. So in the end is 3.3 के पास में आ रहा है, right? Yeah. So this is approximately just 3.3. And what about this guy, which is just 992 divided by 19. I guess तुम इसको 1000 upon 20 बोल सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है. just 50 is like 5 times 10 power -19 बोल दो इसको. Right? Yeah, that's good enough. Okay, ठीक है ना? So just पहला इसका आंसर ये approximately 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये दूसरा इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. 23 is, oh wait, अच्छा नहीं, ये तो just A पार्ट है ना. Shit, but ये 3 पार्ट वाले क्वेश्चंस कैसे? It's gonna take forever in this case. A फिर B. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons. Just kill me already. Okay, hc upon lambda. करो और करो. 1240 upon 260, like ये चीज. 62 upon 13 minus 62 upon 19, right? Yeah.
That's the energy in electron volts, of course. So just 62, नीचे 13 times 19, जो भी होता होगा, we don't care. Oh, it should actually be, yeah, no, yes, that's just 6. Okay, interesting. तो ये आ रहा है. 13 times 19 is what? Who am I kidding? Just do it correctly. 260 minus 13, which is like 7. फिर यहाँ पे 5, 4, 2, 4, 7. Okay, नीचे 2, 4, 7 है. ऊपर क्या है? So 2, 1 carried on 36 like 3, 7. 3, 7, 2 upon 2, 4, 7. करो approximate इसको. होपफुली वो जूल में नहीं पूछ रहा है. पूछ भी रहोगे तो क्या फर्क पड़ता है, सब्जेक्टिव टाइप है. ओके, 372 राइट. लग तो ऐसे ही रहा है. ठीक है, 5 यहाँ पे जस्ट 6 I guess, just 2, 1, 1, 2, 5. So 0, wait, okay, that's not wrong, that's not correct. You can't just do that point. So 1, 2, 5, 0, of course. Yeah, so 1, 2, 5, 0 हाँ. इसमें 2, 4, 7 आएगा. I guess like 5 ट्राई कर सकते हैं इसमें. 5 क्या, just 1, 2, 3, 5. Yeah, okay, 1.5, good enough approximation. Yeah, just move on. So B का approximately 1.5 electron volts. Next question. C. C is the maximum velocity of the photoelectrons. Mass of the electrons फर्क नहीं पड़ता. Just one. Okay, actually फर्क पड़ता है. 1.5 electron volts. Shit. अब अपने को ये जूल में लगने वाला नहीं. पागल कर रहे लोग. Okay, 3 upon 2 times 6 is like 8 times 24. 24 times 10 power negative 20. This is equal to um, half mv square. Half m तो दिया है just 9.1, approximately 9. 9 times 10 power negative 31. And then okay, mass, and then you got v squared. Square वगैरह भी बनवाना इसका. Shit. Okay, तो ये divide किया just 10 power 11. This is like what? 48 upon 9. And this is equal to like v squared जो भी आता है. This is what? 48 upon 9 is divided by 3. just नीचे 3 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है? I guess 45 upon 9 is better things. Just 5 times of 10 power. नहीं, properly करो यार इसको. Still, it's just really bad. 49. Okay, इसमें 10 power 10 है, उसका मतलब क्या करे आखिर. Yeah, that won't work. थोड़ा सा इससे बड़ा है वैसे भी. So right, थोड़ा सा बड़ा अपन कर ही सकते हैं ना. लाइक 50 टाइम 50 तो कर ही सकते हैं, बट ओके. फिर वो क्या, 10 पावर 12, 5.9 अप्रोक्सीमेटली. ये बहुत लंबा हो रहा है. इसलिए ऐसा करो जिससे फटाफट ये अप्रोक्सीमेट हो जाए. It's like 480 upon 9 times 10 power 10 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. दैट्स फॉर v. 10 पावर 5 का ऑर्डर में, बट देन व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्टफ व्हिच इज लाइक okay 450 पहले 5 then 40. फर्क नहीं पड़ता, इसके पास से कुछ भी नंबर ढूंढ लो which doesn't make sense. Okay, I guess 49 is a good, yeah, ये जो चीज है, this is approximately 49 because 49 times 9 is like 36 and 81, which is 441. So ये 441 के पास में ही है ना, who cares. So ठीक है ना, just 7 times 10 power 5, close to that I guess. Next question. ये of course पूरा error से भरा हुआ है, but who cares. Assume that the de Broglie wavelength associated with electron can form standing wave between the atoms arranged in one-dimensional array with nodes that okay. Each of the atomic sites. It is found that once a standing wave is formed if the distance d between atoms of array is 2 angstrom. Similar standing wave is again formed if d is increased to 2.5. अच्छा तो nodes at the atomic sites. Okay, got it. और ये array है atoms की, got it. Okay, similar standing wave is again formed if d is increased to 2.5 angstroms. Okay. But not for any intermediate value of E. Right. Find the energy of electron in electron volts and the least value of T for which the standing wave of the type described above can form. Shit. So it's found that such a standing wave is formed for distance. Okay. So ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी के बारे में आपने कुछ दिया नहीं है. अरे यार तो अजीब है. Nodes at atomic gate is found at the okay. This is kind of weird.
मतलब usually अपन just y equal to a and then all that, right? That's what we assume. But then t को तुमने increase किया, right? Find the energy of electron in electron volt and the least value of t for which the, तो ये दोनों की energy same है, that's what we're saying, right? For which the standing, अच्छा energy same है, then that just means कि right उसका wavelength भी same होगा because momentum, right? So yeah. अच्छा potential क्या है? अरे यार ये पूरा अपन quantum mechanism घुस रहे, that's not good. Okay, electron volts and the least value of t for which the standing wave of the type is covered from. I am assuming कि तुम्हारे दोनों केसेस में एनर्जी सेम थी. If that is the case, because क्वांटाइजेशन अपन एनर्जी का भी कर सकते हैं, राइट? थोड़ी ना है कि तुम्हें वो सेम डी का लेकिन तुम अलग अलग टाइप की एनर्जी डाल सकते हो. सो ये जो हो रहा है, आई मीन जस्ट अज्यूम कि एनर्जी इसकी जो है दैट्स जस्ट सेम. मर गया मैं. ओके, which means the wavelength रहेगी. So wavelength is h upon p, which is like h upon square. अब जो p है, that is mv, which is okay, p, right? Square root of 2k times m, I believe, right? So ये 2m तो constant है, so for the same energy, kinetic energy I'm assuming, तुम्हारी wavelength constant है basically, right? क्या घटिया चीज है. ठीक है. So like okay, wavelength is equal to h upon square root of 2k m. तो kinetic energy कितनी जाएगी तुम्हारी? It's just h square upon lambda squared, okay, or 2m, so 2m lambda squared. होपफुली काम कर जाए. एंड लैम्डा ऐसा है कि ओके, सो जो स्टैंडिंग वेव है ना, ओके, लैम्डा अपॉन टू, राइट? लैम्डा अपॉन टू के सक्सेसिव, राइट? ओके, गॉट इट. दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0.5 एंगस्ट्रॉम्स. So lambda upon 2 is just 0.5 angstroms because yeah, it's got to be the thing. So lambda equal to 1 angstrom, right? Okay, now whatever, she got that. हाँ, आपने करना क्या है, but not for any value of infinity. Okay, find the energy of the electron and the least value of t for which the, so least value of t अपन निकाल सकते हैं. So same wavelength वाली जो चीज रहने वाली है, lambda is 0.5 t, so 0.5 t is the, sorry क्या, 0.5 angstrom, so just that. Yes, so just 0.5 like 5 times of 10 power जो भी in angstroms, so just 0.5 angstroms. Second का आंसर. और फर्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, इट्स गोना बी हार्ड, वेरी हार्ड टू इट. ठीक है, करना तो पड़ेगा ही. यहाँ पे हाफ टी स्क्वायर, कैन यू जस्ट डू दैट? अच्छा, तो ये डी चेंज किया ना तुमने, अब वट एवर. यहाँ पे तुम्हें 1 एंगस्ट्रॉम पुट करना है. दैट्स अबाउट वेवलेंथ ऑफ कोर्स. उफ, चलो ट्राई करते हैं. एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर. हाउ डू आई इवन नो एक्स स्क्वायर? दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग. Okay, h is like what, 2/3 times 10 power negative 10? Wait, no, that's not h. No, that's not h. That's a different thing, right? That's g value. Right, okay, ये तो h नहीं है. Then what is h? It is like 2/3 to I like 2/3 in 10 power negative 33, I guess. Yeah, that was the thing, I guess. Like इतना ये 0.6 something, so फिर ये 34. You get the thing. So it's approximately distance, यानी कि 4/9 times 10 power negative 66 upon mass is like 2 times, approximately just 9 times 9.1 if you want that much. 10 power negative 31, then lambda squared, in this case like just 1 angstrom per square, which is like 10 power negative 20, right? Exactly. So what does it turn out be? 2 upon 9 times of 9.1, and then ये सब क्या है, just 10 power negative 51 ऊपर क्या, just 10 power negative 15, right? Okay, not good. So ये approximately कितना होगा? I mean approximately just 2 on just 81 and then 9, so 81.9, approximately 82. So 2 upon 82 is just 1 upon 41 times 10 power negative 5, 15, sorry. It's like what, 10 power negative 17 ऊपर तुम्हें 100 भेज दिया, 100 upon 41, approximately 100 upon 40 का डालो, just चीज़ को मर जाएगा, just 5 upon 2, which happens to be 2.5. So 2.5 times 10 power negative 17, I guess. And this is in what, by the way? SI units, of course, like just joules, because ये चीज़ तो SI units में थी ना. Yeah, so there we go, this many joules. अपने को चाहिए
इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, एच को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, नहीं, आई डोंट वांट टू। इसको ही करो ना, इसको ही कन्वर्ट कर डालो। सो दिस इज इन जूल्स, ओके। क्यू 5/2 टाइम्स 10 पावर -20 टाइम्स 10 पावर इज लाइक 5000/20 बोल दो ना। और if you want like 2500 times 10 power -20, just 2, okay, 2500 upon 16 electron volts. Good. 25 का सोचा 625 upon 4 electron volts approximately, which is 1 for 12 के लिए 3 and then 1.1 के लिए is 25. I'm gonna leave it like that, 131 electron volts, or you know what, approximate, or 130 electron volts approximately. सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, फर्क नहीं पड़ता कितनी एक्यूरेसी अपन देते। बट ये इसलिए अजीब नहीं लग रहा, 130 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वॉट एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये भी वैसा ही है यार। Maximum kinetic energy of photoelectron emitted from metallic surface is 30 electron volts when monochromatic radiation of wavelength lambda falls on it. When the same surface is limited to the light of wavelength 2 lambda, the maximum kinetic energy of photon is observed to be 10 electron volts. Calculate the value of lambda. So तुमने एनर्जी को क्या कर दिया? So पहले तुम्हारे 2 lambda, एनर्जी is now half. तो हाफ एनर्जी अगर तुम दे रहे हो जस्ट 10 lambda. So like what? Okay. ये जो पहले इसमें एनर्जी थी जस्ट कॉल्स लाइक, oh we also want to calculate lambda and calculate the maximum value incident on, okay, maximum wavelength of incident radiation for which photoelectron can be emitted by this. So basically, yeah, okay, this is just unbearable, isn't it? Okay, if there is no other way, ठीक है ना, करते हैं like hc upon lambda times 1/2 minus 1 plus that, of course. Wait, okay, it's like frequency squared is just frequency, so just 2 times, तुम्हारी जब energy 2 times होगी just 10 electron volts. Okay, so my maximum current is 10 electron volts. So 1 times is just 40, right? I think it's like a difference. 35. Okay, wait. कुछ भी खा जा रहा है नहीं? Yeah. कुछ भी खा जा रहा है ये। एनर्जी तुम्हारे हाफ थी, हाफ हो गई ना, ऑफ कोर्स। सो वो डिफरेंस कितना एनर्जी में? It's like 20. Difference वगैरह कर सकते, like 30 is what? 30 is 2e minus 5, okay, 30, and then ये जो चीज रहेगी just, oh you can actually do difference, okay, minus 5 equal to 10, so just e is equal to what? 20. तो ये जो 2 लैम्डा है उसकी एनर्जी जो रही होगी just 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है हर फोटोन की, तो जो 5 रहेगा that is equal to 10. So okay, awesome. So energy 2 lambda is equal to 20 and this is 5. अब मेरे को निकालना क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा। ये सब क्यों करना? Just hc upon lambda is equal to, wait, अच्छा अगर राइट जस्ट लैम्डा निकाल लेगा then so hc upon lambda is, अच्छा जिसकी एनर्जी 10 होगी वो वेवलेंथ कितनी? 4 लैम्डा, राइट? ओके, मैक्सिमम जस्ट 4 लैम्डा भी निकलना, सो सेकंड का पास जस्ट 4 लैम्डा है, फर्स्ट का आंसर वन निकाल। गॉड, hc upon lambda equal to 40, राइट? ओके, सो लैम्डा कितना? जस्ट hc upon 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये hc इज व्हाट? इज जस्ट 1240 अपन एज्यूम कर रहे हैं। हाँ, वो अपन नहीं करना है सब। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so ये नैनोमीटर में आ जाएगा। This is what? Just 31 nanometers approximately. So lambda is 31 nanometers. Okay. Or 4 lambda is what? 4 times is just 124 nanometers. Right. Next question. 25. 25 is planet of mass m rotates about a star of mass capital M. The time period of the revolution is t, while the average distance of the planet from the star is h. Is known that the axis relation between them. Find it. Assume the dimensionless expression. Okay, क्या है?
the star of mass m, time period of evolution is t, while the average distance of planet from the star is a. हाँ, इसको तुमने मास दिया है, इसको तुमने कैपिटल एम दिया है, तो अपने करना क्या है? Do we have to assume that capital M is like much bigger than m because then our things are correct, right? I guess not. But then the reduced distance will be different, I guess, because elliptical orbits, come on. Time period of rotation is t, while the average distance of a planet from star is a. Okay, whatever. It is known that there exists a relationship between them. कुछ भी और नहीं दिया. अच्छा, time period और average. Okay, got it. Find it. Assume the dimensionless expression for g. What? Dimensional expression? क्या बोल रहा है? I don't know. Anyway, let's do the thing. So usually कैसा रहता है? Just तुम्हारा जो एवरेज ओमेगा रहता है that is equal to gm upon a cube, I believe, right? So what is like is just average distance, of course. And is that the thing? Wait, याद करने दो. That's like force upon है नहीं, that's like field acceleration upon distance. Okay, yeah, it actually is just second inverse, so ठीक है. So how works out per second में आएगा नहीं, square root, of course, square root of this guy. That I should do it, I guess. Right, the square root of gm upon a is just that, but then 1 upon a square root of, yeah, okay. This is in fact just thing. So for example, like a circle के लिए क्या होगा? Just omega square r, omega square a basically is equal to gm upon a square. So like, yeah, for circle it works. It also works for ellipse. अपन derive किया था एक बार. Okay, what do you want? Just time period is just 2 pi upon omega average, which is the square root of a cube upon gm. There you go. That's the thing. आपने को reduced mass वगैरह भी करना है, right? It's like it should be upon g and then reduced mass. I'm not gonna do that. I'm gonna assume that capital M is like much bigger than small m. If capital M is much bigger than small m. जो भी है, next question. 26. 26 is 10 rotations of the cap of a screw gauge is equal to 5 millimeter. The cap has 100 dimensions. Find the what what I'm thinking कि जो अपना star है with respect to that guy, planet का acceleration actually क्या होगा? Just 2 gm upon r squared, right? Right? Yeah. Wait, it's kind of weird, isn't it? Of course, wait. So उसका acceleration 2 gm upon r squared? No, उसका acceleration बताएगा ना. Okay. Wait. उसके according तुम्हारा acceleration कितना है? So just gm upon r squared, that's the force, but इसका खुद का acceleration है g small m upon r squared. So actually just g capital M plus small m upon r square is the actual acceleration that it sees because of that. So अगर मैं right, so using the similar thing, oh god, this could actually work out. Don't you think so? Yes. So यहाँ पे अगर मैं m की जगह पे just m plus m डाल दूँ, you are basically done, isn't it? Well, that could actually work out. Yes, because acceleration scratches there. Centimeter acceleration. So everything aside, अगर मैं just इसको m की जगह पे m plus m रख दूँ, then wouldn't actually work out because yeah, I mean think about it. कुछ और चेंज नहीं हुआ, सारे काइनेटिक्स पूरी तुम्हारे सेम है, जस्ट यहाँ पे m की जगह पे m plus m रख रहे हैं हर जगह पे. Then there's no need for this condition like this. But ये अजीब नहीं लग रहा है. What's the guarantee हमेशा करेक्ट होने वाला है? With respect to star ऐसा ही होगा ना, और क्या सकता है? Anyway, 26. मतलब स्टार पे 80 फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन, so I guess this works. Okay, 10 rotations of the cap of a screw gauge is equal to 5 millimeters. The cap has 100 dimensions. Find the least count. A reading taken for the diameter of a wire with the screw gauge shows for 4 complete rotations and 35 on the circular scale. Find the diameter of the wire. 10 rotations of the cap of screw gauge is equal to 5 millimeters. Okay, 10 rotations is equal to 5 millimeters. Whatever. So 1 rotation is 5 upon 10 millimeter. That's our pitch, right? My pitch here is just 5 times of 10 power negative 4 meters. Okay. Cap has 100 dimensions. What? Cap? क्या बोल रहे हैं लोग? I think बोल रहे हो कि screw has 100 slots or something like that. Find the least count. That's not hard. It's just pitch upon 100 in that case, right? A reading taken from, okay, so like least count is what? L बोल दो, just 5 times of 10 power negative 6 meters, like 5 micrometers.
इसलिए उसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोल दो, माइक्रोमीटर्स। एनीवे, फाइंड द लीस्ट काउंट, a reading taken, so least count is that 5 micrometers। और क्या है, रीडिंग टेकन फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द वायर हैज द स्क्रू गेज shows 4 complete rotation, so 4 pitch plus and 35 is circular scale, ठीक है ना, 35 least count, yeah, find the diameter of the wire, no big deal। So क्या, 4 plus is like 10 power 82 times 30, what 5 is like 0.35, that times of 5 times 10 power 84, right, something like that, just 4.35 times 5 times, ठीक है, करो उसको, just 5 carried on to 7, 35, wait, what, 15, right, so 1 carried on, okay, 21.75 times 10 power 84, or you can just say 2175 micrometers, or like 2.175 millimeters, I think जो भी है। Next question, 27, 27 is, oh ये तो सिर्फ A part था, okay, this is just me, और ये सारे questions जो है ये 3-4 पार्ट के होते जा रहे हैं अचानक से, okay, B क्या है, इनिशियल एंड, एक बात बताओ, ये दोनों कनेक्टेड कैसे है, ये क्वेश्चन कैसे भला कनेक्टेड हो सकते हैं, दिस डज नॉट एक्चुअली मेक एनी सेंस। Proper error limit, okay, okay, error, fine, initial and final temperature of water are, अच्छा मुझे लगा ये thermodynamics का, recorded by the observer as this and that, calculate the rise in temperature, okay, just subtract that, and then like maximum error कितना हो सकता है, 0.5 I guess, because yeah, that's the maximum error, right, हो सकता है कि negative it's like a plus 0.3 हो, और फिर यहाँ पे negative point, yeah, it works out just plus or minus 0.5, right, तो क्या है, 7, 8.3 minus 40.6, 0.7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 37.7 okay, plus minus 0.5 degree centigrade। Next question, 27, 27 is a string tied between x equal to 0 and x equal to L vibrates in fundamental mode, the amplitude A, tension T, mass per unit length mu is given, find out total energy of the string between x equal to 0 and x equal to L vibrates in fundamental mode, amplitude A, हाँ ठीक है, चलिए find the total energy of the string, right, fundamental mode मतलब कि क्या, it's just, yeah, okay, it's like ये तो अपने nodes हैं, this is like बीच में एक एंटी नोड रखा हुआ है, got it, okay, find the energy of the string, right, unfortunately you can't just do कि तुम जो moving wave के लिए करते हो वैसे तुम नहीं कर सकते, right, we'll have to do it in a different way, ठीक है ना, so 2a, wait, amplitude क्या है, isn't it like variant तो, uh, yeah, I mean this should be actually variant, so हाँ, what do you mean with amplitude, इसमें एम्पलीट्यूड किस चीज का, इंसिडेंट वेव, लाइक शिट, अब मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कौन सी एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, तुम जो बीच वाला है उसके एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, तुम कहाँ पे कौन से पॉइंट के एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, या फिर तुम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो जो कि इनिशियल तुम्हारे जो वेव्स थी उनके, आई थिंक इनिशियल वेव्स के जो भी है, सो 2a साइन ऑफ के एक्स में क्या दिया था, एम्पलीट्यूड टेंशन मास पर यूनिट म्यू, सी दिया है व्हाटएवर, लाइक sin of omega t or something like that, that is our thing, right, so energy निकालो इसकी, find for energy string, maximum energy रहेगी at that point, it's like making an arch, so that at that point is this thing, right, Chani, that's not only the thing, just want omega or something, right, that's the thing, just 2a omega sine kx, yeah, so as t changes, right, this is our maximum velocity, so ठीक है ना, got it, like half mv squared चाहिए रहेगा, just half m के लिए just mu dx, and then v का square, this is our v square, इसका integration from x is equal to 0 to L, I guess, yeah, and we kind of know what k is because of like what I just unit upon 2 is this, you know, pi upon L times x is what this thing is, fundamental mode, of course, so क्या है, just 2 mu a square omega square integration from 0 to L sine square of, is this correct or not, pi x upon L, okay, and then dx, right,
वो 2 को अंदर भेजो, 1 माइनस कोसाइन, ओके, और इक्वल्स गो द अदर वे, जो भी है, जस्ट डू दिस थिंग। वो 2 अंदर गया, अभी क्या है, जस्ट 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 पाई अपॉन एल टाइम्स एक्स, राइट। इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा इसमें साइन ऑफ 2 पाई अपॉन एल टाइम्स एक्स आएगा, वो ये हो गई, जस्ट बिकम्स 0 एनीवे। सो इसको तुम भूल ही जाओ, इससे ये इंटीग्रेशन जस्ट एल है, ये जस्ट एल। So just what mu naught, sorry, mu a square omega square L, just that, exactly. Okay, yeah, that works out. Okay, और कुछ बस इतना ही है। So the omega square thing उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट, बिकॉज अपने को दिया है, अपने को क्या दिया, अपने को दिया म्यू, कब मर गया ये, अपने को दिया है म्यू, अपने को दिया है a, अपने को दिया है t, so we know that t, right, okay, what is omega going to be? C क्या होता है, C is square root of t upon mu, and in this case t is, sorry, C is just omega, oh god, so omega upon 2 pi is the frequency times the wavelength, and the wavelength happens to be what, just 2L, right? Well, yeah, this is the thing, this is this guy, omega L upon pi is equal to square root of t upon mu, so जो अपना omega square था, that was just pi square upon L square times t upon mu, डाल दो उसमें, mu omega square was just this, like what, a square L pi square upon L square, the test of tension, got it, just a square pi square t upon L, that's the answer. Next question 28, मुझे ये चीज़ याद रखनी चाहिए, इनफैक्ट क्या पता मुझे बाद में काम आएगा। 28 is a block of mass m is placed on smooth horizontal surface, is connected by two elastic strings AB and CD of equal length L, ABCD equal length L. Young's modulus y and 2y, area of cross section A upon 2, a spring of force constant C. Okay, both the strings and string, okay, and conditions. Find the time period of the small oscillation of block along the horizontal line. ठीक है ना, यंग्स मॉडल्स में दिया है y, अच्छा ये क्या है, इलास्टिक स्ट्रिंग्स, इनिशियली अनस्ट्रेच कंडीशन में, जब ये अपन इसको कंप्रेस करेंगे, डू दी स्ट्रिंग कम इनटू, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये स्ट्रिंग्स है, इट्स नॉट लाइक रॉड्स और एनीथिंग, राइट, अटैच नहीं की तुमने इस पे, किए है बट स्ट्रिंग्स है, दे विल सैग, व्हिच मींस कि इसमें और इसमें तुम्हारा के अलग अलग रहेगा, ओके, yeah, okay, y2y, area of cross sections A and A upon 2 and spring of force of C जो भी है, equal length L, so A B C D respectively बात करो, राइट, ओके, K क्या रहता है अपना, जस्ट okay, y, the Young's modulus times the area, cross section area, got x upon L, this is our force, right, so F upon x is our K value कितनी हो जाएगी, just Young's modulus A upon L, okay, so KAB, like K1 बोल दो उसको, K1 क्या है, just YA upon L of course, and K2 is यहाँ पे 2 आ जाएगा, and then A की जगह just A upon 2 रखा है, which is also just YA upon L, works out I guess, okay, cool, so that is इसके K constants, which combined is just like what, 2YA upon L, तो इस वाले इसमें तुम्हारा जो K complete combined है just what, 2YA upon L plus C, right, and that upon M, so उसका square root of, that's our omega, whatever, like 2 pi square root of M common is in fact, what do you get, तुम्हें वैल्यूज नहीं दिए, थैंक गॉड में वैल्यूज नहीं दिए, जस्ट वन अपॉन sort of this guy, just like what, उफ, इसको थोड़ा सा चेंज करो, like 2AY plus LC upon L, right, yeah, just this thing, L upon 2AY plus LC, okay, plus oh, you don't want 2 pi, just want pi actually, okay, और जो दूसरा था just square root of M upon K होगा, because और C or whatever, right, इस वाले इसमें, so just that, just 1 upon square root of C, this works out, so that's our answer. अब ये धीरे धीरे हो के एरोडो भी हो रहा है पूरा, मुझे ऐसी वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है यार, आई वांट दी मोर रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग, जिसमें इतना सारा डिराइव ना करना पड़े. Two particles execute SHM parallel to x axis about the origin with the same amplitude and frequency,
SHM parallel to x-axis about the origin, parallel to x-axis. Okay, about the origin with the same amplitude frequency at certain instant they are found at distance a upon 3 from the origin. एम्पलीट्यूड सेम दिया है, फ्रीक्वेंसी सेम दिया है, और क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लाइक सो जस्ट फेज डिफरेंस है उनका. ओके, फाउंड एट डिस्टेंस a पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड अपोजिट साइड. ओके, बट द वेलोसिटी इज फाउंड टू बी अपॉन इट डायरेक्शंस. तो अपोजिट साइड पर है, अपोजिट डायरेक्शन से, लाइक distance a upon 3 you are saying. Oh, that's kind of weird. So एक तो पॉजिटिव में रहेगा और इसकी वेलोसिटी इज लाइक मे बी इट्स ओवर हियर, तो फिर इसकी वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव, सो यहाँ पे जाना चाहिए. ओके, एंड देन अगर ये यहाँ पे रहा देन इसकी वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी. सो फेज डिफरेंस पाई का है, जो भी नेगेटिव वाले इसमें था उसमें पाई प्लस आ रहा है, राइट? या फाइंड द फेज डिफरेंस पाई, ऑफ कोर्स 22. दैट वाज प्रीटी ऑब्वियस, इजंट इट? सो इसका जस्ट पाई आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. Uniform disk of mass m radius are free to roll on horizontal surface as shown. If the disk is given an initial velocity v naught in equilibrium position, find the time period and amplitude of small oscillation of the center of the disk. Initial velocity v naught दिया. Okay, this is like, and it is what, free to roll. Okay, center of the disk. Okay, जो भी है that over there. Equilibrium पे क्या होगा जब ये unstretches अभी ना, then it's just like, okay, we want to find what the amplitude of the small oscillation. Of course. So first of all, इसकी initial energy क्या रहेगी? I mean, इसका omega कितना है? Just v0 upon r, and square of course, like half I omega square. But then that I should be about the contact point. ये क्या है? Disk है just mr square upon plus mr square. You get like 3 upon 2 mr squared, right? So you get just 3 upon 4 mv naught square. That's initial energy, and this is equal to finally तुम्हारा v0 हो गया जब भी amplitude तुम्हारा maximum होगा, because of course like dv dx upon dt should be 0, so like a is, yeah, okay. So this is equal to what? Just half k a squared, because amplitude, right? Yeah, exactly. Initially unstretched, small oscillation of the center of disk. What? Small oscillation? That's weird. हाँ, ओके, सो दैट ये स्प्रिंग अच्छी तरह से काम कर दिया. आई डोंट नो, पता नहीं क्यों उन्होंने स्मॉल ऑसिलेशन बोला है. ठीक है, जो 3/2 mv naught squared upon k is equal to a square. A is just equal to what? v naught square root of 3m upon 2k. जो भी है. So that's our amplitude. Awesome. Next question. Although मुझे ये ऐसा doubtful लगता है हमेशा energy conservation, but most of the time energy conservation is the way to go, and it's the easiest way to go, at least. I think we should stop, right? So I'll see you guys next video. Bye.